सो फार हमने ये डिस्कस किया है कि जब भी हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है, तो उस लीनियर ऑपरेटर के थ्रू जब हम उस लीनियर ऑपरेटर के लिए जब हम आइगन वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उन्हीं आइगन वैल्यूज़ के लिए जब हम आइगन वेक्टर को देखते हैं, तो उनमें से हम कुछ आइगन वेक्टर को लेकर एक बेसिस बना देते हैं, एक ऑर्डर्ड बेसिस। और फिर हम कहते हैं कि हाँ, वी हैव अ बेसिस of the given vector space which contains the eigenvector of linear transformation T। अगर ऐसा है तो T को हम डायगोनलाइजेबल बोल देते हैं। बट ये जो तरीका है जिसके थ्रू हम लोग आइगन वेक्टर से बेसिस बना रहे हैं, दैट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू। ठीक है? हम इस तरीके से बेसिस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। वहाँ पर हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, स्लाइड ट्रिक यू कैन से। जैसे कि हमारे पास अगर एक वेक्टर स्पेस है V, suppose, and whose dimension is vector V, whose dimension V is n, finite dimensional vector space है। तब हमें ये पता है कि इस V के अंदर कोई भी ऐसा सेट S whose cardinality is n और S एक Li सेट है। अगर ऐसा सा सिनेरियो है तो इस केस में ये Li सेट इस V के लिए एक बेसिस का फॉर्मेशन करेगा। ओके, और हमने ये रिजल्ट भी पढ़ा है दैट इफ V इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस N, then any linearly independent set containing n element will be a basis for the vector space V। हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम ये प्रूव करेंगे कि कब एक सेट Li की फॉर्म में हमें मिलेगा और किस तरीके से फिर वो Li सेट वेक्टर स्पेस V का बेसिस बनाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आइगन वेक्टर रखने वाला कोई Li सेट बेसिस बन जाएगा तो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन बाय अ थ्योरम, एंड दिस थ्योरम सेज let T be a linear operator on a vector space V, and let lambda 1, lambda 2, and so on lambda n be distinct eigenvalues of T. Now if V1, V2, and so on Vk, this Vn, we have this n, then we are having n eigenvectors are eigenvectors of T such that each lambda I corresponds to Vi, where I is running from 1 to n. Okay, then this set, then the set V1, V2, and so on Vn. This is an linearly independent set। ठीक है, सो लेट अस आइडेंटिफाई दी प्रूफ फर्स्ट। अब हमें यहाँ पर कुछ अलग से कंसेप्ट यूज नहीं करना है। वी हैव अ सेट एंड वी वांट टू प्रूव दैट दिस सेट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, और हमें पता है अच्छे से कि कब हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करके एक सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट बता सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सपोज वी हैव, फॉर एग्जांपल सपोज वी आर हैविंग टू एलिमेंट, ओके, x1 एंड x2। तो हम क्या करते हैं,
इससे मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट से जिनको हमने स्केलर बोलना है और हम इसको जीरो वेक्टर के इक्विवेलेंट प्रूव करते पुट करते हैं. That means we are taking the trivial representation of these vectors x1 and x2. Then our target is to prove that a1 and a2 both are equal to 0. That means any of linear combination of these vector x1, x2 like this, it will be 0 if and only if a1 and a2 are 0. अगर हम ये प्रूफ करने में एबल है देन वी कैन से x1 एंड x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब यहाँ पर हमने v1, v2, vn इनके पास खास बात क्या है कि ये सभी t के आइगन वेक्टर्स है कॉरेस्पॉन्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव आइगन वैल्यूज. ठीक है, जैसे लेमडा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग v1, लेमडा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग v2, इसी तरीके से लेमडा एन के करस्पॉन्डिंग वी एन. ओके, ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है इन वेक्टर्स के पास. सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ बाय द इंडक्शन. सो वी आर राइटिंग दैट वी प्रूव दिस बाय इंडक्शन on n. And now where is n? n is as the subscript of the vectors of vectors जिनको हमने linearly independent proof करना है. ठीक है, so सबसे पहले let, this is the first step, let n equals to 1. Then t has a an eigenvalue lambda 1 and the corresponding eigenvector is v1. अब क्योंकि हमने इसको आइगन वेक्टर बोल दिया है देन इट मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0, राइट. हमेशा जब भी आइगन वेक्टर होंगे वो नॉन जीरो ही होंगे, और जैसे हमने कहा v1 इज आइगन वेक्टर तो इसका मतलब ये नॉन जीरो होगा. सो देयरफॉर, और क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, देन द सेट containing v1, that means the singleton set is Li. ठीक है, linearly independent. जैसे ही कोई सिंगलटन सेट होता है जिसके जो कि नॉन जीरो से एलिमेंट को कंटेन करे वो Li सेट हो गया. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. सो दिस स्टेटमेंट is true for n equals to 1. Let's suppose that the statement is true for n minus 1. That is the set with set v1, v2 and so on vn minus 1 is linearly independent set. ओके, ये हमने सपोज कर लिया है. ये हमारा इंडक्शन स्टेप हो गया है. तो अब सेकेंडली हम क्या प्रूव करेंगे, सेकेंडली अब हम क्या शो करेंगे, देन वी विल शो दैट द सेट containing vn also, that will be Li. Then in that case we have a1 v1 plus a2 v2 plus and so on plus an vn equals to 0. Now our target is to prove a1 a2 an ये सारे 0 हैं. ठीक है, अगर हमारे पास इस तरीके से है, क्योंकि ये जो vn है वो लेमडा n के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, देन वी कैन थिंक अबाउट एन ऑपरेटर दैट इज ऑन अप्लाइंग the operator, which operator, t minus lambda n I.
जैसे आप देखेंगे अगर हम इस ऑपरेटर को सब पे अप्लाई करेंगे, एट द लास्ट ऑन द राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टी वी एन माइनस लेमडा एन वी एन. Okay, then tvn will be lambda n, so we will have 0 here. ठीक है, that is the trick. On applying the operator t minus lambda I on the both sides, we have, अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो we have t minus lambda n I on a1 v1 plus and so on an vn, that is equals to t minus lambda n I ऑन 0. हमें पता है t लीनियर ऑपरेटर है, i लीनियर ऑपरेटर है, तो lambda n I भी लीनियर ऑपरेटर होगा एंड द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर विल बी ऑल्सो एन लीनियर ऑपरेटर. तो बेसिकली ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है दैट इज अ लीनियर ऑपरेटर. और लीनियर ऑपरेटर के अंदर जीरो वेक्टर की इमेज जीरो वेक्टर पर ही जाती है. ये लीनियर ऑपरेटर के बारे में हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई, इफ वी अप्लाई दिस देन वी हैव फॉर द फर्स्ट एलिमेंट t minus lambda n I on a1 v1 plus t minus lambda n I on a2 v2 plus and so on plus t minus lambda n I an vn, that is equals to 0. Now if we write this calculation then we have this implies t of a1 v1 minus lambda n I of a1 v1 plus t of a2 v2 minus lambda n I a2 v2 plus and so on plus we have t an vn minus lambda n I an vn, that is equals to 0. Now we have this t a1, क्योंकि t लीनियर ऑपरेटर है तो we can write this as a t v1 plus minus lambda, क्योंकि I भी लीनियर ऑपरेटर है so we can write this as lambda n a1 v1, I की इमेज v1 पर v1 plus we can write this as a2 t of v2 minus lambda n a2 v2 plus and so on plus you can put a bracket here so that we can identify this plus sign plus then we can write this also. So we have a n, ये हम क्यों लिख पा रहे हैं क्योंकि t लीनियर ऑपरेटर है, माइनस lambda n a n v n. Okay, so we have this one equals to 0. Now we have this t v1, क्योंकि v1 आइगन वेक्टर है corresponding to the आइगन वैल्यू lambda, so t v1 will be equals to lambda 1 v1. So we have a1 lambda 1 v1 minus lambda n a1 v1. Okay, then similar thing can be written for the v2, so v2 lambda 2 v2 minus an a2 v2 plus and so on plus an lambda n vn minus an lambda n an vn. Okay, you can see the last term on the left hand side is an lambda n vn and lambda n an vn, both are the same terms, so we have this one is equal to 0. So this implies, इसको हम थोड़ा सा स्पेसिफाई करके क्या लिख सकते हैं, आई एम टेकिंग a1 एट द फ्रंट साइड, सो वी हैव a1 then lambda 1 minus lambda n
and v1 plus then we have a2 lambda 2 minus lambda n and v2 plus and so on plus this an is 0. So I'm writing here 0 equals to 0. This implies now you can see the we have given that these are the distinct eigenvalue. That means a1 a lambda 1 lambda 2 lambda n इनमें से कोई भी दो इक्वल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि v1 अप टू vn माइनस 1. लेट मी क्लेरिफाई दिस कि vn माइनस 1 तक जितने भी टर्म्स हैं वो सारी ज़ीरो है, उससे पहले वाली नॉन ज़ीरो रहेगी. सो वी हैव प्लस a n minus 1 lambda n minus 1 minus sorry this is lambda n minus 1, yes right, lambda n v n minus 1. Then the next term is 0 equal to 0. This is the actual scenario. Now we are given that each lambda i's are distinct. That means lambda 1 minus lambda n is not equal to 0, lambda 2 minus lambda n is not equal to 0 and so on. Okay, so let me write this here. Suppose this is our equation number 1. This is our equation number 1 and call this as equation number 2. So since all the eigenvalues are distinct, right? So therefore we can say therefore lambda I minus an is not equal to 0 for all I running from 1 to n minus 1. ठीक है.